Let's sit in silence for some 30 seconds and get centered. Breathe in and breathe out deeply. Be in gratitude. Maybe be guided with love and light. Okay. Yes. So what was that question, Vidya? So my question is, usually we look at spirituality, the way our conditioning is, it's taught that spirituality kind of comes from a space of not abundance. Like ये जो हमारी जो इंडिया में जो थिंकिंग होती है, जो उनकी वो होती है, तो not knowingly you end up putting that in your head, like and that at the same time it starts depleting you from your self-worth because you feel it comes with guilt. तो जब तक you by the time you realize it, there's a lot of time is passed by, but then you start thinking that self-worth is not about proving it out to someone else, but it should be inside. It should come from within. Like Richa mentioned, the Swadhyay course, me and her, we both did it kind of together. And it brought a lot of light to me. But even working on myself and going through your sessions and kind of keeping the balance in both ways, there's a lot of learning that I received. And my question is, I'm still trying to figure it out that is it possible to be where I am right now in a spiritual place or whatever you call it, and still be part of the world, enjoy it fully, but still keep yourself detached at a level. It's what happens with me when I am so much connected to myself or higher self, whatever you name it. I know there's a shift in life and I tend to make my own little world and I am somewhat in balance. But just like they say, when we do anything good, we don't expect anything back or monetary level or anything. And same thing that I referred to before, how we connect the spirituality with that. So how we get out of this and still move forward in everyday life, taking it out there, but not feeling that guilt, like achieving your goals, that something should return back, because everyone has to make a living for life. And I know you're going to say there's an intention. What intention you're going out with? The intention is not there to make money, but yes, intention is to sustain. That's what I'm talking about. Not as a profitable way, but how do I get out of that guilt that अगर मैं कुछ acquire भी करती हूँ कोई skill, तो ये है कि I am like, okay, bring it on. जिसको आना है आ जाओ, मैं free में सिखा दूंगी, मैं free में सब कर दूंगी. So this is where I'm stuck. I can understand. I've been through this for a real long time. One, spirituality is not about not having money, not receiving money. Money is a means that allows you to operate in this society. Now, call it unfortunate or whatever, but the fact remains that
Humans are one species that require money for even the basics. To everybody else in this existence, it is available. No animal needs to earn to make to have food or to stay somewhere, whatever. We need because we live in conditioning. We do not live in the existential fashion. So we require money. Now, when it is about आ जाओ सिखा देंगे free में, there are two things that happens. One, people, for most of the people, do not value things for free. That you will realize. The second thing that happens is you will not be able to expand your work. Zoom के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना. अगर सपोर्ट मिल गया तो वंडरफुल. आई गॉट सपोर्ट, आई रिसीव सपोर्ट, सो दैट वाज ग्रेस. नहीं मिलता तो मैं 40 मिनट्स का सेशन करती या फिर अपनी जेब से खर्च करती. either of the two. So from the for the very basic, इंटरनेट के लिए भी पैसे लगते हैं. I need to have either I earn or I be dependent on somebody who's earning for me. स्पिरिचुअलिटी डिपेंडेंसी तो सिखाती ही नहीं है. आध्यात्मिकता ये कभी तो बोलती नहीं है दैट आप तो दूसरे के ऊपर मजे लो, ट्रांजैक्शन करो और उसके बाद आध्यात्मिक बन के घूमो. सो गोइंग आउट, earning a living is important. We cannot deny that. Now, why guilt? It's because we have this connotation that there is so much for free available to us, so I also must. You do it to certain extent as a process of giving because you just love giving. You can't hold yourself. जैसे आभा जी उस दिन बोल रही थी ना ग्रुप में कि मैं रुक ही नहीं सकती हूँ ना, मुझे कोई रिटर्न में दे नहीं दे, पर आई कांट हेल्प माई सेल्फ. मुझे अगर सपोर्ट करना है तो करना है. तो वो ऐसा हो कि करना है तो करना है, मुझे कोई दे ना दे, इट डजंट मैटर. बट देन यू विल हैव टू फिगर आउट समथिंग पैरेलल which supports you in earning your living. Especially if you are not alone, if you have some responsibility, you have children. स्कूल तो भेजोगे ना, फीस तो देनी पड़ेगी ना. आप सरकारी स्कूल में तो भेज नहीं पाओगे. तो so so where will it come from? So you will have to earn, and please know this, that if you want to expand things and if you want people to respect, there is nothing wrong unless you are charging exorbitantly, maybe, or you're not coming from the center of love. You're coming from the center of कि मैं इतना जानती हूँ और मेरे पास इतना knowledge है और मैं सबको free में दूँ या मैं इतने में दूँ. Until those things are not functioning, it is all right to charge. You will have to. You charge via donation method, you charge via putting a fixed thing amount method. So the way I was talking to you, that I'm creating a digital course, and that is primarily for youngsters, although the line of action is spirituality only, but it is not in the way of spirituality. It is more in the contemporary way because it is for millennials and youth. Now, if I have to expand, I have to reach to many, I will have to go ahead with advertisements. How will I create advertisements? I will have to have website. How do I create my personal branding? I will have to have many other things. How will I do all those things if I do it all for free? Where is it coming from? Where the money will get pumped in from? Plus, जो लोग ऐसे आते हैं ना, उनका commitment level भी बहुत low होता है most of the time. Until it's the core spirituality that we are talking about, जहाँ पे people come because of their calling, not because of money. So, और इनिशियली स्पेशली जब आपको पता है कि इनको कुछ भी स्वाद ही नहीं है, अभी तो इनको स्वाद भी डेवलप कराना है. लेकिन इन्फैंट उसको जिस तरह का स्वाद आप डेवलप कराइए छोटे बच्चे को, वैसा ही खाता है. तो अभी तो स्वाद भी लगाना है, तो you can't do it for free. So there is no need for guilt. You will have to do it because it has to reach to many. In fact, if you are not doing it, it will never reach many.
And it is a process. When you do it, now the only thing is that your value that you give should be so much, so much, so much that it surpasses whatever you're charging. If you're charging 100 rupees, you must be able to give 500,000 rupees worth of value. And then it is not just justified. You give so much that people do not question. They love to be with you because they know that the value that they're receiving, it is so immense. It is so immense. And then when you come from the center of giving, when you come from the center of love, when you come from the center of nourishing, rest of the things are taken care of. Rest of the things are taken care of. ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा था और मेरी तो कंडीशनिंग का हिस्सा था ये, क्योंकि मेरी मदर मुझे बचपन में ना किसी से कुछ लेने नहीं देती थी. मी एंड माय सिस्टर वी वर ट्रेन्ड नॉट टू आस्क. हम रिलेटिव से भी कुछ नहीं मांग पाते थे क्योंकि नहीं, मांगना नहीं. And she had her conditioning because she was told by her father-in-law and her mother also that it's okay to live in rags, but it's not okay to take loans. So mangna became equal to loan. Now she's coming from that generation. इसका नतीजा ये हुआ that in sales I failed miserably. मतलब मैंने जब मैं ट्रेनिंग भी करती थी ना तो मैं बोल ही नहीं पाती थी कि मेरा इनवॉइस प्रोसेस कर दो. I had to work so much on myself to come to a state wherein I say कि मेरा इनवॉइस प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, वो कब कर रहे हो. नो 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 नो, आई नीड दैट, आई नीड दैट. जहाँ पे काम है वहां पे काम है. And then hence at certain places you get in with advance payment. You receive the payment and get, and then, for example, in healing, I do not do it post. I receive the payment, then only I'll start healing. Otherwise I'll not do healing. नहीं तो क्रेडिट नोट लंबा चौड़ा चलता है. People forget and you keep sending reminders. चेज ही करते रहते. Okay. रोहित आप कुछ कह रहे. हाँ, सेम इशू हियर ऋचा जी कि ये कंडीशनिंग जितना है ना. सो बेसिकली आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. तो कभी कोई क्लाइंट फोन पे पूछता है अच्छा आपके चार्जेस क्या है, तो उसको अमाउंट बताने में झिझक होती है. मैं बोला आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा अमाउंट आपको, बिकॉज वो अमाउंट बोलने में भी एकदम झिझक हो जाती है. तो बेसिकली आई थिंक काइंड ऑफ ये थोड़ा एक कंडीशनिंग, राइट कंडीशनिंग है घर से. एंड आई गेस कुछ स्पिरिचुअल चीजें भी पढ़ी थी मैंने जिसमें पैसे को एकदम धिक्कार के बात करते हैं. तो वो भी एक इनग्रेन्ड पार्ट हो जाता है कि ऐसा लगता है कि पैसा मांगोगे तो आपकी विद्या भी छूट जाएगी. इट्स लाइक दैट सिचुएशन. तो So I have one more term for that too. See, I tried that what you said, पर है ना क्या एक योगेश सर बोलते हैं, मुझे बहुत सुंदर लगता है the way he says it. The mind is the Krishna, how he creates the web of Leela. So even if I charge someone, my mind will be like, you know what? Whatever money I made, I take it from here and then pass it on to some cause or charity or something. So I don't live with it that I attained the money. So, your mind plays that. Like carrying a guilt is different. You make a first step. You still need to, I think I'm still working on it. It is okay to get the surplus. It is okay. I can keep it. There is nothing wrong with it. But it is a lot of conditioning. Yes, definitely. and with spirituality this comes very heavily that you must not ask money. And it one reason, okay, I definitely agree that the fundamental things of life actually come for free. You do not pay for love. And we live such a beautiful life. We have got air for no reason. Why should oxygen be 20% in the atmosphere? What have we done so special? The pressure of air, I mean, it just, if it changes little up or down, we are bound to go off. We get sunlight for free. All important things for living really is free. In fact, I'm not sure, we were once discussing that it's some American aboriginals or something, they do not understand the concept of buying a land. How can you buy land? Can you buy air? Can you buy space? Can you buy water? How can you buy land? So, but man has moved
from the spiritual living towards economic living. Now the parameter is not joy, the parameter is money. And in that, this problem will come. So, yes, although we receive most of the things that are important for life free of cost, having that gratitude, thanking, and accepting whatever comes to you, and doesn't mean whatever that you can't ask for it, you definitely ask for it. Even when it comes to you, you thank it that it has still come to you after asking also. And then also probably doing some kind of charity in whichever way, whatever you feel more. You do it for environment, you do it for education, you do it for some spiritual mission, whatever, some charity, and then the circle gets completed. That has to happen. The problem is that the attitude with which we receive money, we forget gratitude, we forget thankfulness, and we take it as our right. No, it is not our right. We all know that many of us go through financial crisis despite having best of the ability to earn. Things just does not work. Why then things work for you whenever they work? So to have that element of gratitude, because you know a war happens somewhere and many others are affected. What has really Sri Lanka done to get affected so much? One pandemic, the entire tourism industry went off. And then so many things. You have one organization filing for bankruptcy and the world gets into recession, which happened in 2008 with Lehman Brothers. And I can never forget it because I had a very good, hefty package job for me, which got shelved. And then I had my time, good time of crisis. So when things work for you, you must know that they're not working because you are so capable. They are working because various forces in this existence is supporting you in some way or the other. Without that, it will not function. We are lucky that we were not in Russia, in Ukraine. Were we not? We were lucky. So to have that gratitude whenever you receive whatever, that it has come to you as a prasad, and then it is all right. And then it is all right. This is what how I look at it. Yes, Rohit. Richard, I feel one other factor is this mental conflict with money is a peculiarly middle class issue. I've seen rich people don't have that conflict with money. People in the poor strata don't have this conflict with money because I've heard, हमारे circles तो same ही होते हैं middle class. So I've heard that whenever कभी कोई suppose I used to hear adults talking about a doctor, so they used to be like, अरे वो तो पैसे छाप रहा है, या कोई और प्रोफेशन में वो तो इतना छाप रहा है पैसे, एंड इट्स नॉट लाइक कॉन्ग्रेचुलेटरी टर्म में, वो एक डेरोगेटरी टर्म में वो यूज होता था कि ही प्रिंटिंग मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उससे भी एक ये चीज आता है पैसे के प्रति, यार ये गलत चीज है क्या? तो उसका ना एक कारण ये भी है कि हम अपने माइंड के मास्टर तो होते नहीं हैं, हम होते हैं स्लेव. तो पैसा जैसे ही आता है ना वो सर पे चढ़ जाता है और अब हम पैसे की स्लेवरी करते हैं. इनफैक्ट इफ यू लुक एट, यार यहाँ पे ना थोड़ा सा संभल के अपना डील नहीं बनेगा. You see the language that we use, no? We bow down because deal नहीं बनेगा. We cannot be assertive. हमको अपने सुपीरियर से बात करने में परेशानी क्यों होती है? Because stakes are high. Entire life surrounds around that stake. So money becomes not just a standard to, actually one, it becomes a standard to your capability. How capable you are depends upon how much of money you have. And
second problem is, when it comes to us, we are so corrupt that we corrupt money. We corrupt money. अब इतना तो कोई डेप्थ में जाता नहीं है कि वो माइंड को स्टडी करे, वो मन को समझे कि मन कैसे काम करता है, और पैसा मन को करप्ट कर रहा है या मन पैसे को करप्ट कर रहा है. इन एग्जैक्टली द सेम वे ना, जैसे सोशल मीडिया का हाल है. 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम पे जाते हैं, 2 घंटे निकाल के आते हैं. इंस्टाग्राम की गलती है या आपकी गलती है? फिर हम कहते हैं सोशल मीडिया मैनेंसिव. समवेयर हमने वो सीखा तो है नहीं. वी हैव नो होल्ड ओवर आवर रिलेशन. तो हम इसको ऐसे लेबल कर देते हैं. एंड आई हैड दिस लेबलिंग ह्यूज कि माय मदर यूज्ड टू से, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए. तो भाई मेरे घर कितने साधु आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं या 2000 आ रहे हैं? तो मैं कैसे करूं? साईं कितना दीजिए. एंड दीज हैव बीन very badly manipulated to manipulate your mind. And you know, once you have money, people go crazy. इंटीरियर डिजाइनिंग करवा रहे हैं जी हम तो 10 लाख का, 50 लाख का. क्यों सिंपली नहीं रह सकते हो? उस पैसे का और कुछ अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता है? नहीं, वो तो इस्तेमाल होगा कि हमारे कपड़े कहाँ से आते हैं, हमारी लॉन्ड्री कहाँ को जाती है, हम कहाँ पे जाके शॉपिंग करते हैं, हम कहाँ पर वेकेशन करते हैं, हम कितने स्टार होटल में रुकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. हम कैसा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम किस तरह की पार्टीज में जाते हैं, हम किस तरह का ड्रिंक लेते हैं. भाई कौन सा लेते हो? देसी लेते हो, विदेशी लेते हो, क्या लेते हो? जब मनी आता है तो हमारा दिमाग ऐसे घूमता है. तो obviously the kind of company then that we will have, they also will be of similar type. तो मैं भी show off, तुम भी show off, तो पागल बनो. और क्या होता है? What else happens? Yeah, your success is measured by how much you make. And you know this digital community that I'm part of, I have seen that in their webinars, there are people who say, I do not have this much of money to pay you. And these people don't even respond to these messages. They simply say, they simply have this in mind कि यार मेरा YouTube चैनल है ना, उसमें सब फ्री में है, यही कंटेंट है जो मैं यहाँ देता हूँ वहां भी देता हूँ. इट्स जस्ट दैट यहाँ पे हैंड होल्डिंग है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो वहां पे नहीं मिलेगा. अगर आपको फ्री में चाहिए तो वहां से सीखो ना. सीखने के तो बहुत सारे तरीके हैं. व्हाई डू यू वांट टू कम इनटू माय सिस्टम? तो ये this is the flow of energy in certain way. Be genuine, be authentic, operate from the center of love and giving and nourishing, and then it is all right. पारुल कुछ कह रहे हो क्या? यहाँ पे ना मैंने एक, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक एक्चुअली शुरू हुआ है. यहाँ पे मैंने अपनी खुद की ना एक एक्सपीरियंस से मैं शेयर करना चाहूंगी कि पहले मेरा भी ऐसा एटीट्यूड था, मनी तो ऐसा है वैसा है ये वो. तो मेरे हस्बैंड ने एक मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि बोले व्हाट डू यू वांट टू डू, अगर बहुत सारा पैसा तो व्हाट डू यू वांट टू डू. मैंने कहा मैं ना किसी के लिए कुछ लेकिन आई ओपन समथिंग की, जैसे किसी अंडर प्रिविलेज ऐसे के लिए. तो मैंने कहा उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? तो मैंने कहा मनी चाहिए. तो बोले बोले व्हाट, बोले बाय यू बीइंग रिच ना, बोले यू आर एक्चुअली गोइंग टू डू समथिंग गुड फॉर अदर पीपल, नॉट कि you will not become arrogant, because you will only become what you are. So अगर तुम पैसा नहीं होगा ना तो भी तुम arrogant रहोगे. अगर you are, and अगर होगा तो भी तुम बिगड़ नहीं जाओगी. If you are in not, then so उसके बाद में ना I began to respect money more. What कि हाँ, you started to say, Parul, the point to note is one should not get into accumulative mentality, which is a big problem. Accumulation, हम money is a tangible accumulation, पर उसके बाद हम relationship को भी accumulate करते हैं. हमको कुछ भी मिल जाता है तो हम पागल के जैसा उसको, my cousin was once he was brand manager for Levi's, and it's
10-15 years ago की कहानी. दीवा वो हुआ करता था लैक्मे का, आई थिंक फैशन शो और समथिंग, and he was sharing that Levi's had sponsored the event, and after that Diva show they opened one of their store for free, that आपको जो कुछ भी लेना है, to the celebrities, आपको जो कुछ भी लेना है आप ले लो. People like मिनी माथुर, भगदड़ मचा दी थी इन लोगों ने कि क्या क्या फ्री में उठा लें कि आज के बाद तो मिलेगा ही नहीं. And these are the people who are looked upon, they are celebrities, they have huge money, और वहां पे ये हाल थी. तो it's a lot about this, it's a lot about where you're coming from. You will become accumulative if you think you don't have enough. You will become accumulative if you feel you are cut off from that divine. You will become accumulative if you do not live in faith. You will become accumulative if you think world is such a sad place to be and there is so much of problems, etc., etc., when you cannot accept whatever comes to you as a prasad. Accumulation is the way then that happens, and this is the problem then. So what will I do with the money that comes is a big question. You are very right, Parul, on this. So yes, you will require money. In fact, आपको वो पढ़ना है ना, तो आयन रैंड का At Last Shrugged एक नॉवल है. She has talked for 4 long pages about the virtues of money. And At Last Shrugged का concept ही ये है, when the capitalists, there's some 8-10 capitalists, how they stop the world because they are being accused of being accumulative, they are being accused of being industrialist. So what happens when they shut down their industries? And that's where she has talked of that, and such a beautiful description of what money is, what it is meant to be. Very beautiful. If I'll find out, I'll share the pages. वो है 1000 पन्ने की नॉवल, इतने छोटे जो 8 फॉन्ट में लिखी हुई. So, but it's a beautiful description that she has given. नहीं, वो जो नेगेटिव जो हम लोग सोचते हैं ना मनी के बारे में, इट्स नॉट दैट नेगेटिव. कहने का मतलब मेरा यही था कि आई थिंक यू ओनली बिकम ना हु यू आर. जैसे मुझे ये बात बहुत पसंद आती है, यू ओनली बिकम हु यू आर. तो अगर आपके ना इररिस्पेक्टिव ऑफ, अगर आप गुड हो तो भी वही रहेगा, अगर बहुत अच्छे समय हो तो भी आप वही रहोगे, अगर बहुत खराब समय, वो थोड़ी जो गंदी वाली वृत्तियां कहीं बाहर आ सकती हैं, बट यू नो ये कितनी आएंगी वो भी आपके ही विवेक के ऊपर. और अभी इतने ज्ञान लेने के बाद में भी अगर इविल रह जाएंगे तो कोई फायदा नहीं. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे याद आ रहा है. कहते हैं कि एक राजा जो है वो एक गुरु को ढूंढ रहा था. तो जाते जाते वो जंगल में पहुंचता और वहां पे देखता है एक व्यक्ति, एक सन्यासी है, और कपड़े वपड़े भी नहीं है उसके पास, लेकिन बिल्कुल मस्त है. और ये इसे लगता है कि अरे इसमें तो कुछ स्पार्क है, जाके पैर पकड़ लेता है कि आप मेरे गुरु बन जाइए, आप मेरे राज्य में चलिए. और उनको फिर बहुत मेहनत करके ले आता है. तो दिस फेलो आल्सो कम्स. महल में आकर के, बिल्कुल महल के ठाट में गुरुजी रहने लगते हैं. वो आलीशान बिस्तर एंड कपड़े एंड फूड एंड ऑल दैट. सो नाउ द राजा थिंक्स आफ्टर 6 months कि अरे मैं तो सोचता था कि ये बड़ा महात्मा है, इसे तो चीजों से कोई मतलब नहीं है, और ये तो देखो वस्तुओं में कैसे लिप्त है. And he has forgotten totally that he is using all that which I have given to him, and I got him to teach me, and look at him. So then he goes to the rishi and he says कि मैंने आपको गलत समझा और ऐसा ऐसा है, और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे कहता हूँ कि अब आप चले जाइए. ऋषि ने उसको देखा, मुस्कुराया, उसकी सारी चीजें उसको दी और निकल लिया. Now Raja is like, भक, ये क्या हो गया? He never thought that the rishi can give it up so easily in an instant. He could never see that if rishi was in the
kingdom, enjoying all that, there was still a sense of detachment. Rishi was not being mastered by all that. He was not slave of all that. He still remained the master. So it did not take him even a second to leave all that and move on. And then he again ran behind him that, Nani, I am mistaken, I was wrong, blah, blah, blah. And Rishi said, now it's okay, done, job done. You have got your destiny, that's all. So ये एक डिटैचमेंट का सेंस ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. एंड हमारे साथ होता क्या है कि हम बैंक अकाउंट देखना शुरू कर देते हैं हर दूसरे मिनट कि कितना आया, कितना गया, कितना बचा है, और फिर कैलकुलेशंस. So that's a problem. Shilji, I received your question. How to choose right career at age of 48? मैंने आपका वीडियो देखा था, बहुत ही बढ़िया लगा. एक्चुअली आपने बोला था बच्चे के लिए, लेकिन वो मैं अपने करियर को रिलेट कर रहा था. मतलब मैं खेलना चाहता था क्रिकेट, लेकिन मैं चल पड़ा इसमें. तो फिर कल वो मेरे को एक रियलाइज हुआ कि अभी क्या, अभी इस एज में मैं करूँ क्या. तो मैं सोचूं अब डिसीजन मेकिंग कैसे करूं मैं. पहले तो ये समझिए कि करियर क्या होता है. The first thing first is, what is career? Career is not just some work that you engage in. टिपिकल मैनेजमेंट लैंग्वेज में भी बोलेंगे तो वहां जॉब एंड करियर के बीच में एक डिफरेंशिएशन बताते ही हैं. It is not something that you just do for earning a living. And I have always been saying this to everybody, that it is not about what you do, it is about how you do. If you are good at whatever you do, money तो will come. आज नहीं, कुछ delayed आएगा, पर वो आ जाएगा. The question is how authentic you are in what you do. So, and where you are doing it from. Are you doing it from, जैसे ज्यादातर लोगों की जो स्थिति है वो यही होती है ना कि भाई देखो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं कोच हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, और मैं ऐसे सपोर्ट करता हूँ, मैं वैसे सपोर्ट करता हूँ. All that I have, I just want to give, I want to share. If that is not a feeling that is coming or that is taking over, then anything that you do will be challenging. Hopping on की स्थिति बनी रहेगी और आप कुछ समय बाद उससे बोर होते रहोगे, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं है ना आपके साथ. There is no connect between what you are, who you are, and what you are doing. And who we are, वो तो internally एक calling सबके पास रहती है. ये अलग बात है कि हम सुनते ही नहीं है. One way to know the right work that you should engage in is what work you still can do even if you are not paid for 3 months, 6 months. What you can still keep doing. If you get an answer to this question, most probably you have figured out which field you should get into. What is the field that you can work in? Now, when it is about picking up a job, then you are dependent upon the industry. You are dependent upon the market. You are dependent upon the environment. उसमें तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जहां पर आप फिट बैठ सकते हो, so that you start getting paid. ठीक है? And you will have to prepare yourself in accordance. And वहां पर the sense of detachment is even more important. Otherwise, you will feel that you are being used. क्योंकि ये तो सीधा सीधा फैक्ट है कि अगर आपको 10,000 पे किया जाता है तो आपसे 50,000 का काम लिया जाता है. आपको पसंद आए ना आए, you will not get a boss who will be very supportive. बहुत किस्मत अच्छी हो तो ही मिलता है. You will not get colleagues, peers
who are supporting you. You cannot expect cooperation, good communication and all that. वो सब training topics अच्छे होते हैं, सीखता वीखता कोई नहीं है. सही बात है, सही बात. तो वहां पर तो आपको, मेरा ये काम है, this is my KRA, I do my job well, I am proactive, I take initiatives, I communicate, and I am alert if people are using me. In the sense, people are creating trap for me. क्योंकि ये भी होगा. You have people of all kind making this world. You do not know where you are getting into. But most likely हम जैसे होते हैं हमको वैसा environment मिल भी जाता है. Most likely. तो ये सब के साथ when you keep working with a sense of detachment कि जब ऑफिस से आप बाहर निकलते हैं तो आप उसको वहां पे ही छोड़ सकते हैं. You don't carry it home. तब तो आप नौकरी कर पाओगे. नौकरी में ना, फ्रेंड ऑफ माइन यूज्ड टू से कि बेटा नौकरी में ना हम नौकरी होते हैं, कुछ भी बोल लो, इसीलिए उसका नाम नौकरी है. तो अनफॉर्चुनेटली अब तुम जिसके नौकर हो वो शिव तो है नहीं. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू बी स्लेव ऑफ शिवा. शिव तो है नहीं. तो जिनकी भी नौकरी करोगे वहां पे तो ऊपर नीचे चलेगा कहानी. अब उन चीजों को अपने भीतर पेनिट्रेट करने दोगे आप तो प्रॉब्लम है. वहां पे तो ये सोचना भी नहीं है कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ या मैं एडजस्ट कर रहा हूँ. You do your job because that's essential for your living and you come back home. Now, at core, who you are is going to create all the environment, all the shift in you, your energy, and how you move ahead and how you land up, how you progress. आप ब्लेम गेम में भी शामिल हो सकते हो और आप एनकरेजिंग काम में भी शामिल हो सकते हो. That's totally a choice. That's totally a choice. किसी भी सिचुएशन में आपको 4 बातें सुना दी जाए, आप उसको पेनिट्रेट ना होने दो, मुस्कुरा के उसको इग्नोर कर दो, अपना जो काम जरूरी है, जो मांगा जा रहा है. और अगर आप इतने बुद्धिमान हो, इफ यू आर दैट अलर्ट एंड यू हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड माइंड, आपको ये भी पता होगा कि आपके बॉस को किस तरीके का काम चाहिए होता है, आपका पीओर कैसा है, आपको कैसे करके देना है, इंपॉर्टेंट क्या दिखाना है वहां पे. So the office environment is totally different, unfortunately. हमारे ऑफिस एनवायरनमेंट में स्पिरिचुअलिटी जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स है ना वो प्रॉफिट है. जब प्रॉफिट मोटिव ऊपर आता है ना तो बाकी सारी चीजें बैक सीट ले लेती हैं. एम्पैथी, कंपैशन सब बैक सीट ले लेता है. आप 5 दिन छुट्टी ले लोगे ना, उसके बाद देखो एम्पैथी और कंपैशन का क्या होता है. So you have to understand कि ये कौन सी जगह है, यहाँ पे क्या काम करता है, और क्योंकि अभी मेरी ये जरूरत है तो मैं अभी यहाँ पे कैसे दूं अपने आप को. Now coming to you being an independent in your work. Now it is a choice. I could say no to a lot of jobs that came to me because I was alert that it will take away my time. फॉर एग्जाम्पल आई स्टे इन इंद्रापुरम इन गाजियाबाद एनसीआर. मुझे द्वारका से जॉब ऑफर्स आते थे, गुड़गांव से जॉब ऑफर्स आते थे, और ये सोच के कि मुझे 4 घंटे रोज का ट्रैवल में निकालना है, आई वुड से नो. मैं हफ्ते में 5 दिन अगर 4 घंटे ट्रैवल करती हूँ तो मैं बचूंगी कहाँ कुछ और भी करने के लिए. सेल्फ वर्क तो जीरो होगा, जीरो. उतने में ही वो इन्वायरमेंट ही मेरे ऊपर इतना हावी हो जाएगा दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. सो I could do 2 things. One, I decreased my need because I never had that kind of resources for myself. And I kept working on smaller projects in freelancing that I could do, that was supporting me. And I could manage. That was my strategy. One can choose with what works for them. But if you want to then do anything of yours, you have to understand this. No, unless आपने अपने लिए एक तरह का ब्रांड क्रिएट कर लिया. एंड ब्रांड से मतलब आई एम नॉट टॉकिंग इन द सेंस ऑफ कमर्शियल ब्रांड, आई एम टॉकिंग इन द सेंस ऑफ पीपल नीड टू नो
आप क्या करते हो, क्यों करते हो, क्योंकि ना हम 7.5-8 बिलियन लोग हैं, हम बहुत सारे हैं इस धरती पर, और मैं जो काम करती हूँ वो कोई यूनिक नहीं होता है, मेरे जैसे काम करने वाले लाखों करोड़ों में होंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ मार्केट होता है, बट यू विल देन हैव टू रीच टू द राइट पीपल जो आपके काम के वैल्यू को समझ सकें और उससे वैल्यू ले भी सकें, who are genuinely interested in getting associated and getting that value. Then you will have to work in creating your space so that people know and they come and they join you and get associated with you. This process takes time. This is where your activity on social media comes into picture. This is where blogging comes into picture. This is where having a website comes into picture. This is where Facebook comes into picture. You create a space for yourself wherein people know what you do and why it is important. And those who can understand its importance, they will come to you. So one can be in job and parallelly keep developing this so that a time comes when the job can be quit and you can be full-time into what you are doing, because now you have created that kind of ecosystem that you can sustain yourself well. And if you are in job, please know यहाँ पे क्या मिलेगा और यहाँ पे मुझे क्या देना है. स्पिरिचुअल होने का जो सबसे सुंदर बात है वो ये है कि आप मन को समझते हो, क्योंकि सबके मन एक जैसे होते हैं, कुछ अलग नहीं होता है. हम सबके, कृष्णमूर्ति always talked about universal mind. He said man has a universal mind. Why? Everybody's mind is full of hatred, fear, guilt, competition, all that you can think of. Depression, sadness. फ्रॉइड का तो पूरा काम ही इस पर बेस्ड है that how can man live sanely or less insanely rather with the kind of insanity he has. जॉय की तो बात ही नहीं करते हैं, हैप्पीनेस की तो बात ही नहीं करते हैं. So, and I love when Kabir says कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर. And I always had been saying कि what kind of quality of mind is that God is actually chasing you. So spirituality has that capability to actually transform the quality of your mind. And when you understand how mind functions, despite the fact that your mind is compassionate, your mind is loving, you have empathetic thought process, others do not have, you would know how to really behave, how much to give liberty and how much not to give liberty. और ये बहुत important होता है. या तो आप उस संत की तरह हो जाओ, जो कहानी हमने कई बार कही है कि वो एक संत था जो गांव के बाहर बैठता था, पेड़ के नीचे एक बिच्छू था, हमेशा डंक मारता था, और वो संत उस बिच्छू को बस हटा देता था. और गांव वाले एक दिन कहते हैं कि आप इसको मार क्यों नहीं देते. तो संत कहते हैं कि उसका तो स्वभाव ही है, या उसकी तो वृत्ति ही है डंक मारना. मेरी वृत्ति ये नहीं है, मेरा स्वभाव ये नहीं है, मेरा स्वभाव करुणा है, तो मैं उसको उठा के रख देता हूँ. वो अपने स्वभाव से वशीभूत काम करता है, मैं अपने स्वभाव से वशीभूत काम करता हूँ. I act as per who am I, and that Scorpio act as per who he is. तो या तो आप उस संत की तरह हो जाओ, तो फिर आपको वो डंक लगेगा ही नहीं. You will not be hit by that dunk. क्योंकि उस संत की तरह होने का मतलब है कि जिसको वो डंक लगता है, which is ego, that has dissolved. But in most of our cases, ego dissolve होता नहीं है. हम 4 बार थप्पड़ खा लेंगे ना, 5वें बार हम खिसी आ जाएंगे. थप्पड़ मारा, मैं क्या थप्पड़ खाने के लिए पैदा हुआ हूँ?
तो थोड़ी सी बुद्धिमानी रखिए कि कोई थप्पड़ क्यों मार रहा है, और किसी को हमने इतनी लिबर्टी दे कैसे दी कि कोई मुझे थप्पड़ मार दे। In fact, even when you come from the space of love, you can be like that कि कोई थप्पड़ मारेगा तो उसे पटाक उल्टा पड़ेगा, because it is about the right action, it is not about the conditioned action, it is not about the conditioned reaction. When operating from the space of love, तो क्या एक्शन होगा ये अनप्रेडिक्टेबल होता है टोटली। आप थप्पड़ मार दोगे या प्यार करोगे या चार बातें सुना दोगे या इग्नोर मारोगे, क्या करोगे, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन। लेकिन इतना जरूर है कि अब इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि मुझे कहाँ क्या मिलेगा। मैं कश्मीर में जाकर के 40 डिग्री तापमान नहीं ढूंढूंगी ना, और मैं चेन्नई में आकर के बर्फ नहीं ढूंढूंगी ना। तो बस इतनी बुद्धि तो रखनी पड़ेगी कि कहाँ क्या मिलेगा, कहाँ क्या वातावरण है। एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट, बिकॉज यू हैव डिफाइंड राइट नाउ दैट दिस इज योर नीड। इट इज नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग। आज मैं ये हूं तो आज मेरी ये नीड है, एंड द होल pursuit is to go beyond. Whole pursuit is to go beyond. Spirituality is not about living in rags. No, not at all. At the same time, it is also not about accumulating. It is about being really conscious कि चल क्या रहा है बॉस, किसका दिमाग कैसे काम करता है ना, मुझे खूब पता है। और इससे मुझे ये भी पता है कि किस स्थान पे कैसा रिएक्शन देंगे। आपके एक्शन दूसरों के द्वारा लेबल किए जा सकते हैं कि ये देखो अनिल जी को बॉस की चाटुकारिता कर रहे हैं, पर आपको पता है कि आपने एक्चुअली क्या किया है। देखो ना, एक वो भी कहानी है कि एक संत था, और रात में एक शहर में एक जुगनू, विनो जुगनू ना, जिसकी लाइट्स होती हैं टेल में, वो जुगनू घूम रहा है और बड़ा खुश है। संत पूछता है कि क्या बात है, तुम बहुत खुश हो? तो कहता है देखो मेरे ही कारण तो इस शहर में रोशनी है। मन ही मन तो संत मुस्कुरा दिया कि अरे मूर्ख, तेरे इस छोटी सी रोशनी से क्या होगा, शहर थोड़ी रोशन हो जाएगा, तुझे दिखाई दे दे यही बहुत है। लेकिन संत ये नहीं कहता है, संत कहता है हाँ तुम तो ठीक कहते हो, तुम्हारे कारण तो रोशनी। तो जुगनू जो है उसे लगता है कि अरे यार ये तो कुछ काम की बात करता है, ये तो मुझे समझता है, मुझे जानता है, मुझे वैल्यू कर रहा है। जुगनू संत के साथ हो लिया, और कहते हैं कि सुबह होते होते जुगनू भी संत हो गया। तो किसी को ऊपर उठाने के लिए पहले इतना नीचे तो झुकना पड़ेगा ना कि वो आपको अपना हाथ दे, तब तो ऊपर उठाओगे। तो अध्यात्म की दुनिया में तो आपको सिर्फ कोरोलरीज मिलेंगी, आपको कभी भी एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल मिलेगा ही नहीं। All that you will receive is contradictions. उस कॉन्ट्रडिक्शन से आप भाग भी सकते हो और उस कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर मुस्कुरा भी सकते हो। You can get the crux also. It is all about where from you are operating, who you are, and then all contradictions dissolve. Everything becomes all right. It is not about the act, it is about who is doing, that the act becomes right or wrong. In the world of spirituality, you will only receive contradictions, and that's the beauty. आपको वो कोई भी पिलर पकड़ने ही नहीं देगा कि ऐसा ही तो है, मुझे ऐसे ही करना है। You can never come from the past actions. It will not allow you to do that. तो मैं ये करूं कि ये करूं, स्थिति देखो,
आवश्यकता देखो और जाओ करो। मैं बहुत शांति प्रिय हूं, लेकिन अगर वहां पे वॉर होगा, कोई मारकाट करेगा, तो मैं लड़ जाऊंगा। क्योंकि जब मुझे अध्यात्म में ये बताता है that I am not the body, then how can somebody do slavery of it? And how can I try to protect it? तो शांति प्रिय होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं बाहर से बड़ा शांति प्रिय हूं, आई एम वेरी फ्रेंडली टू एवरीबडी। मैं यहाँ पर शांत हूं, यहाँ पे मेरे खटपट नहीं होता, यहाँ पे मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, यहाँ पर मैं अपने आप में लड़ाई नहीं करता, द्वंद्व नहीं चलते कि मैं कभी ये कर रहा हूं कि मैं कभी वो कर रहा हूं। Zen masters are known to be the best of warriors. And Zen is one of the epitome of spirituality. How is this contradiction possible? Because spirituality has no standard action. There is no book that says a spiritual person is like this, a spiritual person is like this, a spiritual person is like this. The only thing is a spiritual person is centered, grounded in peace. That's all. And that's an internal state. From outside, even your peaceful state can be labeled as कितना egoistic है यार, कितना घमंडी है. People can say that also about your spiritual state. And that's all right. Okay. Yes, madam. Thank you. Anything else that is to be discussed? Any question? Any sharing? एक क्वेश्चन कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास मतलब कोई डिसीजन लेना है और आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं एंड यू कैन सी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच, तो is it like you randomly pick one क्योंकि nothing is perfect, or how do you decide कि what is more aligned to you? If you have many choices, one chance is all the choices are suboptimal. So in case you can defer the decision, you better defer it. For example, I'm taking a very gross example. I go to the market, I have to buy a dress, I see 5 dresses. None of them is like, no, this is the one I want. But मेरे दिमाग में क्या है, मुझे उस occasion के लिए चाहिए, मुझे उस occasion के लिए चाहिए. तो ये 5 है, ये ठीक ठाक है, they will do. चलो इसमें से एक उठा लेते हैं. उसका पता है क्या होगा, वो ड्रेस उस ओकेजन पे पहनोगे, वो भी आधे मन से, और उसके बाद कभी नहीं पहनोगे. उसका ये होता है. सब ऑप्टिमल चॉइस ऐसे ही होते हैं. You might pick it up, but it will not have a long lasting life. एक रीजन इसका ये होता है कि मुझे क्लैरिटी ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए. जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग करते हैं ना, तो जो आंसर पता होता है तो हमको दूसरे चॉइसेस देखना ही नहीं पड़ता. यू विल नॉट लुक एट इफ आई गिव यू 4 चॉइसेस कि इंडिया का कैपिटल क्या है. यू जस्ट नो इट. बाकी को इवैल्यूएट भी नहीं करोगे, देखोगे भी नहीं. बट इफ यू डोंट नो इट, ये है क्या, फिर हम अमिताभ बच्चन बन जाएंगे, केबीसी 50-50 and all that will happen. So clarity is a must. Clarity is non-negotiable. Now in the world of mind, माइंड ही क्योंकि डुअलिटी है, डुअलिटी का मतलब ही हो गया चॉइस. तो चॉइस तो आपके पास आती रहेंगी. You will have to be, no, it's like, what do I need? मुझे चाहिए क्या? And I simply pick that up. And अगर मुझे चाहिए क्या, अगर मान लो वो 20 चाहिए
और मुझे 18 मिल रहा है ना, आई एम हैप्पी विथ 18, कि ये 2 पॉइंट्स नहीं भी मिल रहे तो आई एम डन विद इट, तो मैं लूंगी। पर मुझे 16 मिल रहा और मुझे अंदर खटक रहा है कि इसमें ये नहीं है, मैं लूंगी ही नहीं, आई विल नॉट गो फॉर इट, आई वुड रादर वेट। ठीक है, the choice in actually in certain way you can call it confusion. Choice is equal to confusion. If we are seeing looking at different choices, इसका मतलब मुझे पता ही नहीं कि मुझे चाहिए क्या, तभी मैं 10 चीजों को देख रही हूँ। जब पता होता है कि क्या चाहिए तो you become focused, one pointed. So if you can defer it. I once upon a time मैं खरीद लिया करती थी या कर लिया करती थी, नहीं भी है कुछ तो then slowly and gradually I learned, now if I am not very clear, I'll not do it only. मैं आधे मन से कुछ नहीं करने जाऊंगी, और अगर मैं कुछ आधे मन से कर रही हूँ कि मैं इसको ट्राई करना चाहती हूँ, I want to test it, then I'm very clear that this is a testing. I'm not putting my stakes on it कि ये कैसा finally निकल के आता है. If it serves good, if it does not serve good. I know, for example, I have taken tickets for a conference and I'm playing a gamble. Because I do not know about the conference, I only have some idea about the conference. But then I know that I'm playing a gamble. So even if it turns not okay, it's all right. You always decide based on the limited information that you have and the understanding that you have. And at any given point of time, you have 100% information is not possible. It's not possible. अगर पता है कि गैम्बल कर रहे हो, ट्राई आउट मार रहे हो, तो कभी भी कष्ट नहीं होगा, एंड दैट इज द पर्पस, प्रॉब्लम नहीं होगी. हाँ ठीक है, आई न्यू कि ये तो पैसे जाने हैं, आई न्यू कि यहाँ समय जाना है, आई न्यू कि यहाँ एनर्जी जानी है, आई वाज ट्राइंग इट आउट. अब उसी चीज को बार बार ट्राई नहीं करोगे, इतना समझ आ जाएगा. एक पर्सन एक वर्कशॉप देता है, वो मैं ट्राई आउट कर लेती हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि वो पर्सन कैसा वर्कशॉप देता है. मैं बार बार उसको टेस्ट नहीं करूंगी उल्लू बनने के लिए कि यार वो एक्स वर्कशॉप तो बेकार था, वाई वाला अच्छा होगा. नो, I wrote an article, hope is hopeless, and this is for those kind of hope wherein we become hopeful unnecessarily. We do not want to look at the facts because we want something to turn a certain way, so we become hopeful. No, I'm hoping for the best. मुझे पता है अंदर से कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो घटिया, but I'm hoping for the best, and I do not take the right action. I remember a friend of mine, he was in a relationship, and initially it was very nice, and then it turned sour. And the way the other person was behaving, this friend of mine was very devastated. And I said, why are you still continuing? And the fellow said, because I'm hopeful. I said, what? Can't you still see how is the person behaving? Can't you still see what you are getting out of it? Are you looking forward to the transformation in that person, and what will bring that transformation? Why will that fellow get transformed? You must exit it right away. But nahi hope hai. I'm hoping. And many are stuck in such nonsense hope. Nonsensical hope. देखना ही नहीं चाहते हैं कि fact क्या है. Look at the facts and be brutal to yourself. You might want something to come in certain way, but that's nobody is, the universe has no obligation to fulfill your desires and wants. Nobody has any obligation of this kind. So look at facts. And facts को देखना इतना terrible काम है और इतना मुश्किल काम है, क्योंकि आज की दुनिया में तो खासकर हम लोग opinions को respect करने लगे हैं. No, I respect everybody's opinion.
तो अगर ओपिनियंस पे बेस्ड डिसीजन लोगे तो उसका तो गड़बड़ होना तय है ना. Because I might, once upon a time everybody felt earth was stationary, sun was revolving around. तो उससे क्या हो गया? सन को फर्क पड़ गया कि अर्थ को फर्क पड़ गया, या रोटेशन रिवोल्यूशन चेंज हो गया. But imagine all our scientific things would have been based on that. How it would have been. तब हम क्या वाकई रॉकेट भेज पाते थे, सैटेलाइट भेज पाते थे? पॉसिबल था. So it is immaterial what I think, what my opinion is. One must allow it to be broken in front of facts, crumble in front of facts. More you live in facts, easier it is going to be for you. तो डिसीजंस के लिए तो फैक्ट्स देख लो, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए कि ये आपको क्या इम्पैक्ट कर सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. बी रेडी, दैट्स ऑल, एंड हैव दैट फेथ. इवन इफ इट डजंट टर्न आउट टू बी गुड, it is all right. Even if it doesn't turn out to be good, it is all right. We can never join the dots looking forward. We can always join the dots looking backwards. This is Steve Jobs says, na, I'd never understood ki the company I founded, I was thrown out shamelessly from that company. How do you understand that? No logic. But he also said, now I can join the dots. So then faith really moves mountain, because it allows you to move ahead even in the difficult situation. Because you think it is difficult, you really do not know if it is difficult or not. It is our conditioning that says that if you do not have money, it is a challenging situation. If you do not have a vehicle, it is a challenging situation. If you do not have enough clothes, it is a challenging situation. If you do not have enough friends, it is a challenging situation. If you do not have a job, it is a challenging situation. For what evolution of you this situation has come to you? आप इवॉल्व कर जाओ ना, देखो सिचुएशन अपने आप चेंज हो जाएगी. हम इवॉल्व भी नहीं करना चाहते हैं, हम वहीं पे लटके रहते हैं. अब बड़ा मजा आता है, विक्टिम ईगो खूब मजे मारता है और माया हंसती है. फिर ये होता है. लेकिन अगर इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार मतलब मुझे ऐसा लगता है, जब मैं सोचती हूँ तो मेरी नीड्स बहुत कम हो जाती हैं, लेकिन जब इमोशंस ओवर पावर करते हैं तो होता है कि नहीं, ये चाहिए अभी, मतलब देर अभी वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है ना नॉलेज, तो इसलिए वो टू एंड फ्रो होता रहता है, ऐसा लगता है मुझे. नीड्स कम हो जाती हैं. आई डिड नॉट गेट द सेकंड पार्ट. नीड्स इन द सेंस जैसे कि मुझे अभी घर लेना है, तो अगर मैं वैसे सोचूं तो ठीक है, मुझे अकेले रहना है, मेरे लिए छोटा घर भी पर्याप्त होगा. लेकिन अगर मैं मतलब एक अपनी डिजायर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मुझे लगता है नहीं, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे अपना ऐसे कि होगा रूम बनाना, ये करना वो करना, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. तो ऐसा होता है. इसी को लीला कहते हैं. आप बड़े घर की इच्छा भी रखो और पूरी शिद्दत से मेहनत भी करो, और उसके ऊपर कंडीशन भी मत लगाओ कि ये तो होना ही चाहिए. प्ले द गेम फुली एंड लेट विनिंग और लूजिंग बी टेकन केयर ऑफ बाय एग्जिस्टेंस. If you play the game totally, you will be in immersion. Don't shy away from playing the game. ये तो तामसिक सरेंडर है. Don't shy away from playing the game. अपने आप को पूरा लगा दो. अपने आप को पूरा लगाओगे तो अहंकार खुद ही मरेगा, क्योंकि मैं कौन हूं जो लगा रहा है ये सोचने का भी वक्त नहीं है ना. ये आहुति की तरह हो गई बात. तो खेलूंगा तो मैं जम के, पर फिर भी जो फाइनल वर्डिक्ट है ना वो तो उधर से ही आएगा. पर एक चीज और है, और ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा हुआ है जो मैंने ऐसे रिफ्लेक्ट करती हूँ कि होता वही है, मतलब खुशी मिलनी होती है तो कैसे भी मिल जाती है, उसका किसी भी सिचुएशन से या चीज से डिपेंडेंस होता ही नहीं है. लेकिन वो डिजायर्स हैं जो आपको पुश एंड पुल होता रहता है. बट
the happiness that you are seeking is actually independent of it, but still अब जो है उसको उसके से go through तो करना है, उसको उसके beyond जाना है. यस यस यस, आप जो करो पूरी शिद्दत से करो और मजे में करो कि कितना मजा आ रहा है ये पूरी शिद्दत से करने में, और एकदम अपने आप को बचाओ मत, थक जाओ मेंटली फिजिकली, खपा दो अपने आप को, और उसके बाद जो भी आता है वो प्रसाद है. हम खपाते अपने आप को कम है और एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा होती है, ये हमारा गेम गड़बड़ हो जाता है. तो एकदम इच्छा रखो, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं बिल्कुल लूंगी, क्योंकि मुझे स्टूडियो चाहिए, क्योंकि मुझे ज्यादा लोगों को सपोर्ट करना है, बिकॉज आई वांट टू सी, यू नो, इफ आई वांट टू सी this world to be healthy and I want to reach that many people, I will need resources. तो वो तो करना पड़ेगा ना. But all in surrender, not in the दावेदारी कि मैंने तो ऐसा किया है मुझे रिजल्ट नहीं मिला. दावेदारी में नहीं हो सकती, फिर तो आप निष्काम कर्म कर ही नहीं पाओगे, फिर आप निष्काम कर्म कर ही नहीं पाओगे. निष्काम कर्म तो है ये कि मैंने पूरी शिद्दत से काम की. कृष्ण ने ये कभी नहीं कहा अर्जुन को कि तुम जीतने के लिए लड़ो. कृष्ण ने कहा तुम धर्म के लिए लड़ो, और धर्म पे छोड़ दो ना फिर कि वो जीतता है या नहीं जीतता है. फिर उसको जिताने के लिए तो कृष्ण स्वयं आ जाते हैं ना. लड़ना लेकिन हमारा काम है, हम लड़ने से नहीं भाग सकते. ये सब कि नहीं कॉम्प्लेसेंट हो जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, इस चक्कर में ना हम लड़ना ही भूल जाते हैं. दैट मस्ट नॉट हैपन. एक योगी भी अपने स्तर पर लड़ाई कर रहा होता है. एक योगी भी अपने स्तर पर लड़ाई कर रहा होता है. महर्षि रमन से कहते थे लोग, उस समय तो भारत गुलाम था, कि आपके पास इतने लोग आते हैं, आप क्यों नहीं स्वतंत्रता के मूवमेंट में शामिल होते, आप क्यों नहीं उसको लीड करते. वो कहते थे तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ बैठा कुछ नहीं कर रहा. He is in connect with existence at a different level. वो हम समझ ही नहीं सकते कि वो क्या कर रहे और नहीं कर रहे. Although if you look at his biography or whatever, उनकी life history, people researched after he passed by that where he was, the maximum distance he had traveled was in the radius of 7 kilometers. बस वो जहां थे वहां से 7 किलोमीटर का रेडियस लेकर के सर्कल खींच लो, उतना ही मैक्सिमम जो वो ट्रैवल उन्होंने किया है, उसके आगे वो गए ही नहीं. Yet he knew that he was moving the world. तो वो तो वहां पहुंचकर ही समझ आएगा कि कैसे होगा. पर अभी तो जहां पर हो अपने आप को पूरा लगा दो, एकदम छोड़ना नहीं, बचाना नहीं अपने आप, बिल्कुल बचाना नहीं. ये सब कचरे में तो पड़ना ही मत कि अरे यार स्पिरिचुअल आदमी को तो पैसे नहीं चाहिए होते हैं. तुम्हें पता है किस लिए चाहिए नहीं चाहिए. मैं कोई पैसे खरीद करके रिक्लाइनर्स खरीदने थोड़ी वाली हूँ. What am I going to do with that? How am I going to utilize that? You leave on me. मैं कृष्ण को दे दूंगी सारा, तुम्हें क्या. मैं शिव को दे दूंगी सारा, तुम्हें क्या, है ना. So इस रट में कभी नहीं जाइएगा that spirituality is not about earning money. It is about the right center, doing anything from the right center. निष्काम कर्म, पूरी लीला में पार्टिसिपेशन, अहंकार की आहुति, और मस्त, एकदम मस्त. आज है तो इसका इतना उपभोग करेंगे कि सामने वाला को लगे कि अरे बाप रे, और नहीं है तो इतना सा भी मलाल नहीं होगा. ठीक है. एनीथिंग एल्स? ऋचा जी मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ. बोलिए. मैं अभी फिलहाल एंजाइटी पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज सीखा है. देखिए नॉलेज होना ठीक बात है, लेकिन जब तक उस नॉलेज का आप एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं ना, तब तक उस चीज का कुछ मतलब नहीं बनता. मतलब काफी बार ऐसी चीजें पता है, मैंने नॉलेज जैसा आपने बताया एक्युमुलेशन के बारे में,
हाँ, बुक से बहुत सारी चीजें पढ़ी होती हैं और उस थोड़े समय के लिए ना काफी अच्छा भी लगता है कि हाँ मेरे पास ये चीज है और जब जरूरत पड़ेगी ना तब मैं इसको यूज भी कर लूंगा या मैं दूसरों को बताने के लिए भी कर लेता हूँ। जैसे अब मैंने बुक पढ़ी थी डॉक्टर बर्न्स की, एंजाइटी के ऊपर बुक थी और मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मैं इसको तो निकाल लूंगा जब जरूरत पड़ेगी ना। हाँ मेरे को याद है, लेकिन जब मैं खुद इस दौर से गुजर रहा हूँ तो फंडे वंडे तो मेरे को दिमाग में आते नहीं, जब चीज आती है ना तब वो गायब हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता, तब ऐसे हिल जाता हूँ। तब मैंने इस बारी ये गौर किया है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, आपने वर्ड यूज किया क्लैरिटी होनी चाहिए और वो क्लैरिटी तभी बनती है जब उन चीजों को आप अपने डेली लाइफ में, जैसे आप कपड़े धो रही है ना, बर्तन भी धो रही है, तभी भी वो चीजें उस वक्त अप्लाई करती हैं। लेकिन अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं तभी मैं उन चीजों को वहां पे लगा सकता हूँ और उस वक्त अगर मैं उन चीजों को अप्लाई कर पा रहा हूँ तो जब वो चीजें आती है, दिक्कत जहां पे मेरे को एंजाइटी आती है, उस वक्त भी वो चीजें बनती है, मतलब बहुत सही तरीके से उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे आपने वो रिएक्शन और रिस्पॉन्ड वाला फंडा बताया था, राइट? तो वो चीजें ना मैंने देखा है कि अगर मेरे मेरे पास क्लैरिटी है, अगर मैं सही में उन चीजों को समझ पा रहा हूँ या समझा हूँ, तो मैं एंजाइटी बहुत आसानी से हैंडल कर लूंगा, क्योंकि एंजाइटी हर वक्त ना कहीं पे भी ट्रिगर हो सकती है। वो भले तुम बर्तन धो रहे हो, भले तुम झाड़ू लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर वक्त, या रोड पे भी चल रहे हो तभी। तो मेरे ख्याल से एक चीज जो मैंने ये चीज समझी है वो चीज ये है कि आपको चीजों का कंसेप्ट या क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें मैं डेली लाइफ में भी यूज कर पा रहा हूँ तब फिर तो मैं निकल जाऊंगा इससे, नहीं तो अदरवाइज मेरे पास सिर्फ एक्यूमुलेटेड एक नॉलेज ही रहेगा लेकिन मैं उसका यूज कभी नहीं कर पाऊंगा। ये मैंने एक चीज सीखी है जो मेरे को हेल्प करती है, हर जगह पे हेल्प करती है। तब वो मजा एक अलग होता है, क्योंकि एक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप उस चीज को काफी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। एक ही चीज हर जगह पे अप्लाई होती है, खाना खाते हुए भी वही चीज ना अप्लाई होती है। कोई भी चीज अप्लाई नहीं करना पड़ता है, आप हाँ वो जी, हो जाते हो। हाँ हाँ हाँ। बड़ी मजेदार बात है। इनफैक्ट हम लोग हमेशा कहते भी हैं, उपनिषद कहते हैं ब्रह्मविद्य ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म की को जाना, ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानते ही ब्रह्मैव भवति, मैं ब्रह्म हो गया। और मैं स्वामी सर्वप्रियानंदा को सुन रही थी और वो इसी बात को उठा करके कह रहे थे। वो कह रहे थे कि आप जिस चीज को जानते हो आप वो जनरली हो तो नहीं जाते हो। आपने किताब को जाना तो आप क्या आप किताब हो जाते हो? डू यू बिकम द बुक? नहीं नहीं You नहीं। you get to know the food, you become the food. But here Upanishad says, Brahma with Brahmaiva Bhavati. What does it mean? It means that you already are that, it's just that you have forgotten that. ओके। You are already that, just that you have forgotten that. And that is why the moment you get to know, just like Hanuman process, हनुमान उड़ सकते थे पर उनको वो याद दिलाना पड़ा। वो समुद्र पार कर सकते थे, उनमें वो काबिलियत थी, वो क्षमता थी, वो गुण थे, पर उनको याद दिलाना पड़ा। उनको सिखाया तो नहीं गया कि कैसे उड़ना है। It was just that trigger that helped him. So clarity का मतलब बहुत सिंपल यही होता है that I now have become that. उसी को clarity बोलते हैं। And when you become that, you don't apply that. That happens through you. अप्लाई करने में तो एक एप्लीकेटर है, अप्लाई करने वाला है, और एक चीज है जिस पे अप्लाई की जा रही है। बट द मोमेंट यू बिकम क्लियर अबाउट इट, it becomes part of you. There is some shift in your being that happens, and because of that it happens through you. You do not have to take effort to apply it. That is real clarity. उसके अलावा सब कुछ इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन तो किताब में बंद करके रखो ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं इसीलिए आपसे कह रही थी कि आप ब्लॉग्स लिखो, आप जिस जिस तरीके से इस चीज को फैला सकते हो, यू यूज ऑल दैट। पे लिखो, इंस्टा पे लिखो,
you will be able to create your market and then people will start recognizing you. पर अभी घर में बैठे आपको कोई कैसे जानेगा? दूसरा, अभी आप लिखोगे नहीं तो आप कभी अपने आप को आर्टिकुलेट ही नहीं कर पाओगे. You will not know how to express it. Yes, This is an right. opportunity for you to learn to express it. हर व्यक्ति को एक ही बात एक ही तरीके से नहीं समझाई जा सकती. आपको एक ही बात समझाने के 4 तरीके निकालने पड़ेंगे. आप कैसे अप्रोच करोगे? आप कलर थेरेपी करते हो, आपने किसी का आप ग्राफोलॉजी करते हो, आपने हैंडराइटिंग देखा, आपको समझ में आ गया कि इस बंदे का बेंट ऑफ माइंड कैसा है. उसको स्टैंडर्ड तरीके से बता दोगे तो उसको कुछ नहीं समझ आएगा. जब उसका माइंड समझ में आ गया है तो उसको बताने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि वो उस चीज को एब्जॉर्ब कर सके. क्योंकि पर्पस क्या है ग्राफोलॉजी का? टू नो वेयर एम आई एंड हाउ डू आई मेक दैट शिफ्ट, that I become more centered, I become more grounded, I start living in surrender and faith. So if you do not write, you will not learn articulation, you will not learn different ways of communication. ठीक है? Thank you. चलिए, it's already 10:25. I think it's time that we can wind up. Let's do the prayer. Yes. Sit straight, take a deep breath. If you know, you can chant along with me. Om Purnamadah Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnavadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.